Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue to read the 23rd chapter from 4th canto of Bhagavatam, where it is described how Maharaja Prithu went back home. तो हम लोग चौथा स्कंद चल रहा है, 23वां अध्याय महाराज पितृ का भगवत धाम अध्याय जो चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू करने पर हैं। And our today's verse is verse number 37, आज का श्लोक है वो 37वां नंबर श्लोक है, which you can see on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Muktanya Sangho Bhagavat. Muktanya Sangho Bhagavat. Amalam Bhaktim Udvahan. Amalam Bhaktim Udvahan. Vainyasya Charitam Punyam. Vainyasya Charitam Punyam. Shrinuyach Chravayet Padhet. Shrinuyach Chravayet Padhet. Muktanya Sangho Bhagavat. Amalam Bhaktim Udvahan. Vainyasya Charitam Punyam. Shrinuyach Chravayet Padhet. Anyone else? Muktanya Sangho Bhagavat. Amalam Bhaktim Udvahan. Vainyasya Charitam Punyam. Trinuya Akshravayet Pathet. Muktanya Sangho Bhagavat. Amalam Bhaktim Udvahan. Charitam Punyam. Muktanya Sangho Bhagavatya. Amalam Bhakti Udvayan. Vainyasya Charitam Punyam. Patajis. Muktanya Sangho Bhagavatya. Amalam Bhakti Udvayan. Vainyasya Charitam Punyam. Muktanya Sangho Bhagavata. Amalam Bhakti Udvayan. Vainyasya Charitam Punyam. Okay, word meaning. Word meaning. Mukta Anya Sangaha. Being freed from all material contamination. Yeah, you repeat after him. Bhagavati, under the Supreme Personality of Godhead. भगवती भगवान के प्रति, अमलम अमलाम विशुद्ध भक्ति उद्ग्रहण करते हुए महाराज बहन के चरितम चरित्र पुण्यम पवित्र सुने प्रभये सुनाए पढ़े तथा पढ़े।
Okay, translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. A pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in the transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness. But even he, while discharging devotional service, must hear, read, and induce others to hear about the character and life of Prithu Maharaja. कुछ भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतः लीन होने के कारण भी परिवर्तित हो सकता है, किंतु जो भी भक्ति करते समय उसे पितृ महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। Therefore, there is a type of neophyte devotee who is very anxious to hear about the pastimes of the Lord, especially the Rasa Lila chapters in Srimad Bhagavatam. Such a devotee should know by this instruction that the pastimes of Prithu Maharaja are not different from the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. An ideal king, Prithu Maharaja, exhibited all talents in showing how to rule the citizens, how to educate them, how to develop the state economically, how to fight enemies, how to perform great sacrifices, yajnas, etc. Thus, it is recommended for the Sahajiya, or the neophyte devotee, to hear, chant, and get others to hear about the activities of Prithu Maharaja, even though one may think himself to be in the transcendental position of advanced devotional service. श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला के विषय में अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पितृ महाराज की लीलाएं भी भगवान की लीलाओं से अधिक हैं। पितृ महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार इसे विकसित करना चाहिए, किस प्रकार राज का आर्थिक विकास करना चाहिए, किस प्रकार शत्रुओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार शहरिया या नव विकसित भक्त को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को उस भक्ति की दिव्य स्थिति पर समझे, तो भी वह पितृ महाराज के कार्यकलापों के संबंध में अवश्य सुने, जपे तथा अन्यों को सुनाए। Om Namaste Namah Shalakaya Chakshuru Militadina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manotishtam Staditam Yena Bhutale Svayarupavasamadhyam Vadati Svavadantikam Vanshakkalpatarubhyascha Vipasinubhya Dirvacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Om Namo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, this is some it's quite loud now. Yeah, before it was not on. There's something really. Yes. So, it is said in the second verse of Sri Shikshashtaka, Namah Kariva Puran, Nijaseva Shaktis. In the second verse of Shikshashtaka, it is said that these forms in which Supreme Lord comes to this material world, and these names are innumerable. Yeah. भागवतम में बताया गया है भगवान का जो innumerable. What can happen? भगवान के जो नाम है बहुत कार्यान्वित है। So he comes here in this material world on different planes according to his shadow, and this shadow actually can be found in sacred scriptures. For example, the appearance of Lord Gauranga was described before his appearance. उनका जो नाटक है अलग समय में
और इस हिसाब से वो अवतरण देते हैं जो कि शास्त्रों में पहले से वर्णित होते हैं, जैसे कि गौरांग महाप्रभु आने से पहले ही उनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। And the same way like Srila Prabhupada, he left after himself, he left all these matchless gifts that are available for us, including the Reform Society, Vaishnava Society, and his books, etc., and ditties, and temples, etc., etc. The same way, Supreme Lord, each time, every time after his departure, something remains in material world after his departure. जैसे कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद काफ़ी चीज़ें हमारे मंदिर और कई सारी चीज़ें छोड़ के गए, तो वैसे ही जब भगवान इस जगत से हर धाम से जाते हैं, भगवान अपने धाम से जाते हैं, तो कई चीज़ें हमें हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। So in first canto of Bhagavatam, it is said, Krishna Svanamo Bhagate Dharma Gyanadi Kirsara Talam Nashta Drishana Purana Kodamoditara, which means that when Sri Krishna left this planet 5,000 years ago, of course he left this planet not alone. His energies, his attributes, his associates also went out from this planet with him. पहले इसमें भागवतों में बताया गया है, श्लोक को किया कि जब भगवान धाम से गए तो भगवान अकेले नहीं गए, अपनी शक्तियाँ जो भी उनके पार्षद थे सब उनके साथ में चले गए। And Dharma Gyanadi Saha, it means that now after Sri Krishna's departure on this planet, Jnana and Dharma means, Jnana means knowledge, spiritual knowledge, and Dharma means religiosity or this inclination to follow Dharma, to follow prescribed duties. Now, no more Dharma and no more Jnana. And only this darkness of Kali Yuga was there. जब भगवान चले गए तो धर्म ज्ञान धर्म है धार्मिक नियमों को पालन करना, और ज्ञान मतलब जो ज्ञान है, तो वो दोनों जो है वो नहीं थे, उसकी जगह कलयुग का पूरा प्रभाव सब जगह पर आ गया। But it is not that our planet was remaining in this darkness for a long time, because like very nice replacement, which is not different actually, not different from Supreme Personality of God, Shri Krishna. Very nice replacement came, and this replacement, what is that replacement? Srimad Bhagavatam, तो जब कलयुग चला गया तो कलयुग जब पूरा, ऐसा नहीं कि कलयुग बहुत समय तक टिक पाया, क्योंकि जो भगवान का ज्ञान और धर्म का जो रिप्लेसमेंट है बेसिकली वो श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुआ जो भगवान से अभिन्न है। So we can read Bhagavatam and we can get in touch with spiritual knowledge and with understanding what are our prescribed duties as well. तो हम भागवतम पढ़कर तो हमारे धर्म है उससे हम जुड़ सकते हैं, और हमारी क्या धार्मिक गतिविधियाँ होनी चाहिए उसको हम पालन कर सकते हैं। And of course, this position of a king, which Prithu Maharaj took, being empowered by the sages after Maharaja Venu's departure, Maharaja Venu's death. So he was empowered to take the position of a king, and now, by his own example, he teaches, Prithu Maharaja, he teaches how to be a good ruler, a good king. पृथु महाराज जो यहाँ पे उदाहरण पृथु महाराज का उदाहरण आ रहा है, पृथु महाराज जो है वो वेद के मतलब बनने के बाद जो विष्णु के द्वारा मंथन करने से जो उत्पन्न हुए और उनके द्वारा शक्तिगत होने के कारण वो राजा के रूप में यहाँ पे हमें प्रस्तुत हो रहे हैं, वो एक आदर्श राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। And by reading these stories, we can get the idea of Vedic culture, how this Vedic culture was functioning in ancient times. इन कहानियों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि वैदिक काल में कैसे राज्य हुआ करता है। And by comparing this culture with modern culture, of course, it can make someone a little bit upset, or not a little bit upset, maybe. Anyway, some frustration or some
happiness can be there, but anyway we should be happy because we are fortunate to live in Kali Yuga and we can progress spiritually just by chanting holy names of Krishna. तो अगर हम इस वैदिक काल के राज्य को समझेंगे तो हमें आज के समय में और जो वैदिक काल में राज्य होता था उन दोनों को कंपेयर करने में, उन दोनों में समानताएं देखने में थोड़ा आनंद भी हो सकता है और थोड़ा दुख भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जो विधि दी गई है हमें कलयुग के अंदर भक्ति में प्रगति करने का, वो इतनी सरल है कि हमें जो है इसमें दुखी होने की बात नहीं है। So what are the much gifts that Supreme Personality of Godhead gives us each and every time when He comes to material world? तो जो भगवान जब भी भौतिक जगत में अवसर लेते हैं तो क्या क्या तोहफे भगवान हमारे लिए लेके आते हैं? So this knowledge we can get from Bhagavad Gita. We have quite famous verse from there. Paritranaya sadhana vinashaya chadushkritam dharma samsthamana kaya sambhava nirgirge, which means that he has particular goals to come to material world. Paritranaya sadhana, it means to protect and to make happy his devotees, sadhana. इसीलिए भगवान अर्पण लेते हैं तो ये जो श्लोक है भगवद गीता उसके अंदर उल्लेख है, भगवान क्या करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और साधुओं की प्रशंसा के कार्य करते हैं। So it is about relationship between Supreme Lord and His devotees, and actually this goal is considered to be the main cause why Supreme Lord comes to this planet. Basically, He comes in order to be in these relationships with His devotees who are dear to Him. तो सही रूप से भगवान की इसलिए बहुत सामने आते हैं, तो सबसे जो मेन उद्देश्य होता है वो अपने भक्तों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। Like for example, Advaita Acharya was praying to Supreme Lord to come on this earth. So he was quite insistent. Advaita Acharya was quite insistent. So ultimately, Lord Gauranga couldn't refuse. He came and he did what he did. भारत के जो आचार्य है भगवान को अवसर देने के लिए बहुत ही उन्होंने गुहार लगाई, प्रार्थना करी। तो भगवान जो है उनकी जो गुहार है, उनकी प्रार्थना है, उसको मना नहीं कर पाए और अवसर देते हैं। And of course, when this demonic mentality prevails in material world on particular planets, then he comes in order to punish these demonic personalities. और जब जो अधर्म है वो बढ़ जाता है तो भगवान जब अवतरण लेते हैं तो वो दुष्टों का भी विनाश करते हैं। It means vinashaya chadushkritam, and basically this word vinasha, it doesn't mean just to give punishment. Vinasha means to annihilate. हाँ, तो विनाशय चतुष्कृताम, इसका विनाश का मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट देना या दंड देना, वो उनका विनाश करना मतलब उनको खत्म करना ही भगवान का उद्देश्य होता है। Like for example, Hiranyakashipu was killed by Lord Nrsimhadev. He was just killed. जैसे कि हम उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है नरसिंहदेव के द्वारा मारे गए। And in this Kali Yuga in which we live, this particular goal, which usually Supreme Lord executes when he comes to material world, now in Kali Yuga he executes this particular goal in a little bit different way. He doesn't kill atheists physically, but he is about to kill their demonic atheistic mentality. तो लेकिन कलयुग के अंदर भगवान जो है इस कार्य को अलग रूप से करते हैं। वो व्यक्ति के बाहरी शरीर को या व्यक्तित्व को नहीं मारते, उसके अंदर के जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसका विनाश करते हैं। And how he does it? He does it by giving Yuga Dharma. Dharma samsthapanarthaya. It means that he gives particular religious process which is effective for spiritual advancement in this particular period of time. तो वो कैसे करते हैं? वो युग धर्म की स्थापना करके करते हैं ना, तो जैसे कि कलयुग के अंदर में जो उस युग के लिए जो धर्म होता है उसकी स्थापना करते हैं। And of course, there are at least two more Machi's gifts. For example, he sets example how to behave. Supreme Lord, he sets example how to behave, how to be ideal king. And Lord Ramachandra and Prithu Maharaj, for example, they show how to rule
over the country or rule over the planet in ideal way. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Рамая Шри गोविंद। और क्या गिफ्ट देते हैं भगवान? तो भगवान हमें कैसे एक आदर्श राजा को कार्य करना चाहिए और कैसे भगवान कार्य करके दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कार्य करना चाहिए। तो हम रामचंद्र जी के उदाहरण से भी देख सकते हैं और पृथु महाराज के उदाहरण से भी देख सकते हैं कैसे कार्य करना चाहिए, वो सिखाते हैं भगवान। तो ये भी तोहफा है भगवान। And here it becomes really clear why we need all this Shri Guru Parampara system, why we need all these purports. Because sometimes Supreme Lord, when he comes on this earth, his actions, it is exactly example that he is going to set. And in some cases, some of his actions should not be imitated. And how to distinguish? We distinguish between these two by getting proper knowledge through Shri Guru Parampara. तो बेसिकली हमें क्यों गुरु परंपरा के तात्पर्य चाहिए, गुरु परंपरा की क्या आवश्यकता है? तो जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो सही है कि वो उदाहरण स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो आम जनता उसको समझ नहीं सकती और उसका हमें अनुकरण नहीं करना है। तो ये बात हम समझ नहीं सकते, हमें गुरु परंपरा समझाती है तो हम समझते हैं कि इस चीज़ को अनुकरण नहीं करना, इसका अनुसरण करना, तो वो गुरु परंपरा के माध्यम से हम समझ पाते हैं। So that's why these Bhaktivedanta purports are very important. Srila Prabhupada gives this knowledge in a very clear manner, and he wrote these purports in such a way that it can be understood by different people from different countries, with different mentalities, with different abilities. And it is written for the period of 10,000 years. तो इसीलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग मानसिकता के लोगों के लिए, अलग अलग क्षमताओं के लोगों के लिए, अलग अलग देशों के लिए लिखे गए हैं, जो कि 10,000 साल तक पढ़े जाएंगे। In Srila Bhaktivinoda Thakura's times, there was one person who was claiming himself to be Lord Vishnu. भक्तिविनोद ठाकुर के समय में एक व्यक्ति था जो अपने आप को विष्णु बता रहा था। Yeah, and his practice was that he was imitating Rasa Lila, means he was dancing and doing something more sinful with someone's wife, with wives who belongs to other men. वो क्या करता था कि वो अपने आप को विष्णु बताता था और वो जो रास लीला है उसका अनुकरण करने का प्रयास करता था, दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करता था। Actually, it was the main reason why all this process has started, why Bhaktivinoda Thakur became interested to do something with this situation. तो यही कारण था कि भक्तिविनोद ठाकुर भी बहुत क्या बोलते हैं एक्टिव हो पाए कि ऐसी स्थितियों को ठीक करने के लिए। And in Bhagavad Gita, in 17th chapter, which is called Division of Faith, it is written that there are different divisions of faith, and it depends on condition of the heart, under which combination of modes of material nature someone's heart is situated. On this depends what kind of beliefs one will have. तो 17वें अध्याय में हम भगवद गीता में श्रद्धा के ऊपर देखते हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग श्रद्धा होती है और श्रद्धा हृदय के ऊपर आश्रित होती है, लेकिन वो हृदय जो है 3 गुणों के अनुसार होता है। तो जिस व्यक्ति का हृदय जिस गुण के अंदर स्थापित होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। That's why any person who can speak any kind of nonsense everywhere, it is guaranteed that he or she will have some followers. तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी सिद्धांत बोल रहा हो तो कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको पालन करने वाले होते हैं। Like for example, there was one man in Russia who was claiming himself to be Jesus Christ. तो उदाहरण के लिए रशिया के अंदर एक व्यक्ति का है जो कि अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताता है। And he was promoting this idea for maybe 15 or 20 years. Now he is happily sitting in jail. तो 15-20 साल तक वो इस चीज को फैलाता रहा कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, लेकिन अब वो जेल में बैठा हुआ है। So one journalist was interviewing his followers. तो एक इंटरव्यूअर है वो उनके जो शिष्य हैं उनका साक्षात्कार ले रहे थे। And the journalist is asking, do you really believe that he is Jesus Christ? तो जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछ रहे थे उनके शिष्यों से
क्या आप विश्वास करते हैं कि जो आपके गुरु हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं? And this Mataji is answering that yes, of course, he is Jesus Christ. Moreover, I'm really surprised why all these people around, why they are not able to see that he is Jesus Christ. I'm surprised. Why? तो वो माता जी जो है, उनकी जो शिष्या होती हैं, तो बोलती है कि हाँ, वो जीसस क्राइस्ट हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि बाकी लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे। Because it is absolutely clear that he is Jesus Christ. क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जीसस क्राइस्ट हैं। How one cannot understand it? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? It works like this. So ऐसे ही कार्य करती है। there is a particular combination of modes of material nature. It influences on the heart means on the consciousness, conditioned consciousness, and because of that, people they accept different conceptions, different isms, and they follow this path, these ways. तो वैसे ही कार्य करता है कि अलग अलग गुणों के प्रभाव से और उसकी चेतना ढक जाती है, तो वो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उसका पालन करने लगता है और अलग अलग इज्म का पालन करने लगता है। So there are different processes or ways or paths or practices that one can be following in this material world because there is variety, there are different conceptions. But the Supreme Lord, when He comes, He gives Yuga Dharma. He gives Yuga Dharma. He gives the process which is meant exactly for this particular period of time, Yuga, for those who want to become closer to Krishna, for those who want to recover, to revive these relationships. तो अलग अलग सिद्धांत हर व्यक्ति अपनी मनोस्थिति के अनुसार पालन कर सकता है, लेकिन भगवान जो है जब अवतरण लेते हैं तो वो युग धर्म की स्थापना करते हैं। युग धर्म जो उस समय काल स्थिति के अनुसार जो धर्म है उसको स्थापित करते हैं, जिसको पालन करके व्यक्ति जो है कृष्ण के और भगवान के नजदीक पहुंच सकता है। And besides this process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Besides this process of chanting holy names, there are other processes of bhakti that are described in Nectar of Devotion. तो भक्ति रसायन सिंधु में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, उसके अलावा और भी कई विधियां बताई गई हैं भक्ति करने की। And one of these processes is to listen about Supreme Lord, about His pastimes, activities. और उसमें से एक विधि है भगवान के बारे में सुनना और भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में सुनना। It is one more much gift that He gives us, that He goes to another planet of material world to preach and to be present there. But there is a memory about Him. There are these stories. And those who are interested in, they can meditate on these stories, and then they can be like in connection in yoga with Supreme Lord. Even He is not present now on this planet anyway. It is not so different. There is no much difference when there is meditation. Then anyway, there is relationships. We have these relationships with Krishna or with Ramachandra, or it depends on which avatar or expansion we meditate. भगवान जो है किसी भी धाम में किसी भी जगह अपनी लीलाएं कर रहे हों, लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम लीलाओं को सुनकर स्मरण कर कर भगवान के साथ योग में रह सकते हैं और भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के ध्यान में और भगवान के फिजिकली प्रेजेंट होने में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप भगवान अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी हैं तो भगवान की लीलाएं और गुण को सुनकर हम उनके साथ योग में रह सकते हैं। Yeah, I would like to emphasize that if we speak about Supreme Lord, we cannot say physically present because He is never physically present. He comes in spiritual body in this material world. It is not physical body. It is not material body. It is spiritual body. प्रभु जी इस चीज को emphasize को स्थापित करना कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कभी भी भौतिक शरीर में नहीं होते हैं, भगवान आध्यात्मिक शरीर में होते हैं। तो भगवान का भौतिक रूप से प्रस्तुत होना बिल्कुल गलत है। तो भगवान जो है आध्यात्मिक रूप में ही हमेशा रहते हैं। And spiritual body, it means that He is there, but He is not under the control of the laws of material nature. आध्यात्मिक शरीर होने का मतलब है कि भगवान उपस्थित हैं
लेकिन भगवान जो 3 गुण है उसके प्रभाव में नहीं है। It means that all the story, Janma Mrityu Jara Vyadhi, it is not about him. तो इसका मतलब ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता। And he doesn't suffer like we experience these threefold miseries. तो जैसे कि हम 3 ताप हमें कष्ट देते हैं, वैसे उनको कोई 3 ताप नहीं लगते। From our own body or mind, or from other living entities, or because of the weather. तो बेसिकली हमारे जो 3 ताप हैं जो हमें अपने मन से प्राप्त होते हैं, जो दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, या फिर जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। Even if he experienced so-called sufferings, it is his lila. अगर भगवान हमें दिखते भी हैं कि कुछ इस तरह से ताप उनके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन वो सब उनकी लीलाएं हैं। Like for example, there is famous story, famous pastime, like Krishna had a headache. Krishna has got headache. तो बहुत फेमस एक लीला है कि भगवान श्री कृष्ण को सर दर्द हो गया। Everything is controlled by Krishna. Ham sarvasya prabhavoma tak sarvam pravartate. He is the source of all worlds, material worlds, and spiritual worlds also. तो लेकिन हर चीज क्या भगवान के कंट्रोल में, वो सरदर्द उनके कंट्रोल में है। क्यों? कि जो भी भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत जो है, अहम सर्वस्य प्रभु, हर चीज क्या है उनके नियंत्रण में है। He is supreme. No one can influence on him. No one can force him to do something. His free will is absolutely free. Absolutely free. वो परम है और कोई भी उनके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। तो सबसे ऊपर है उनकी फ्री विल, जो उनकी जो स्वतंत्रता है वही उनको कंट्रोल कर सकती है। So basically, it means if he has got headache, it means he desired, let me have this headache for some time. अगर भगवान को अगर सरदर्द हुआ है तो वो उनकी ही इच्छा है कि उनको सरदर्द हुआ है। So he had headache and he told to Narada Muni, he told that you please collect some dust from lotus feet of my devotees and I will put this dust on my head and then because of that this headache will go away. तो जब उनको सरदर्द था तो नारद मुनि जो हैं उनको भगवान ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि भक्तों के चरणों की धूल लेके आइए, जिससे कि मैं अपने सर पे लगा के मेरा सरदर्द जो है चला जाएगा। So Narada Muni was approaching different devotees. He was approaching brahmanas. He was approaching different people, but all of them they were refusing. तो नारद मुनि फिर अलग-अलग लोगों पे, जैसे शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सबके बहुत और भी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन सब मना करते हैं। They were saying it will be aparadha or it will be a sinful activity. Sin and aparadha is not the same. Anyway, some of them they would consider this to be sinful activity. Some of them they would consider this to be aparadha. Anyway, it is not desirable. Because of that we even can go to hellish planets, so we don't want. तो सभी लोगों ने ये कहना था कि अगर हम भगवान के चरणों की धूल हमारे चरणों की धूल भगवान के सर पर लगी तो ये अपराध है और हमें इसके लिए नरक जाना पड़ेगा। We don't want to go to hell. हम नरक नहीं जाना चाहते। Well, it is natural desire. No one wants to suffer basically. कोई भी कष्ट नहीं प्राप्त करना चाहता, ये तो बहुत स्वाभाविक है। So Narada Muni approached gopis and the gopis they told that okay, we will give you this dust because we want our Krishna not to suffer. Just tell us what we have to do in order to make Krishna not to suffer. We will do whatever is needed. फिर जब गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियों ने बोला कि ठीक है, हम आपको जो है हमारे चरणों की धूल दे देंगे, हम कृष्ण को कष्ट में नहीं देख सकते और जो भी करना पड़ेगा कृष्ण के कष्ट को दूर करने के लिए वो हम करेंगे। So basically it is called gopi bhava or particular mentality when devotee is not so much concerned about himself, he just wants to satisfy Supreme Lord. तो ये गोपी भाव है कि जो भक्त है वो अपनी संतुष्टि या अपना आराम नहीं देखता, जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो करता है। And this mood is manifested by our acharyas, for example, this mood of self-sacrifice. Srila Prabhupada, he shows this mood
we can read Srila Prabhupada Lilamrita and we can see what kind of austerities and challenges he had to go through in order to execute his spiritual master's order. तो ये हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों में ये गोपी भाव, जो कि जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, लोगों को देने के लिए, और तो हम देख सकते हैं उनके जीवन में। लीलामृत पढ़ सकते हैं, लीलामृत के अंदर इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। So mainly this story with Krishna's headache happened just in order to glorify devotees. तो जो ये लीला है श्री कृष्ण के सर में दर्द होना, तो ये सिर्फ इसलिए उद्धृत करी गई कि जो गोपियों को का गुणगान कर किया जा सके, To glorify their devotion. उनका जो भक्ति है, गोपियों की जो भक्ति है, उसका गुणगान किया जा सके। So he, Supreme Lord, after each and every appearance in particular planet of material world, and then he is about to disappear, but anyway, all this memory about his leelas is there. तो भगवान जो है किसी जगह से अगर अवतरण भी हो जाए, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं वो हमारे पास होती हैं। And in purport to today's verse, Srila Prabhupada writes that some devotees, I'm not reading from here, I'm just explaining. Some devotees, they are selective, they choose to read Rasa Lila only from Srimad Bhagavatam, from 10th canto. तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि कुछ भक्त जो हैं ऐसे हैं कि वो जो 10वें स्कंद में जो रास लीला है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। But well, Srila Prabhupada was telling about this, that first of all one has to understand what his adhikar is. Adhikar. तो प्रभुपाद जी इस बारे में बताते हैं कि व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि क्या उसका अधिकार है इस चीज पर। And according to this adhikar, one should have particular way how to practice bhakti yoga and how to what I'm going to read, what leelas I'm going to listen, and what leelas by this moment I'm not yet ready to listen because I'm not ready to perceive it properly. अधिकार के हिसाब से उसको सोचना चाहिए कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और क्या मैं इसको सुनने के लिए काबिल हूँ या नहीं। And the test that Srila Prabhupada was giving is very simple. If one reads this 10th canto, this Rasa Lila, and if, because this Rasa Lila looks like, from mundane point of view, it looks like ordinary relationships between young men and a lot of young girls, then the test is very simple. If one reads this Rasa Lila and he feels that his lust, his karma increases, then likely there is no adhikar at this moment. Better not to read. तो प्रभुपाद जी इसका टेस्ट भी देते हैं, इसकी परीक्षा देते हैं कि अगर कोई 10वां स्कंद पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद जो है उसके काम वासनाएं बढ़ जाती है, तो उसको समझना चाहिए कि वो उसके अधिकार की चीज नहीं है। Otherwise, it is written here in the purport that there is such a category of people which is called sahajiya or neophyte devotee. It is written here, sahajiya or the neophyte devotee. तो ऐसे लोगों को जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सहजिया या नवदीक्षित भक्त है। And it is particular category of practitioners who have a habit to take everything cheaply. तो ये एक प्रकार के ऐसे साधक हैं जो हर चीज को सस्ते में लेते हैं। Or they have a habit to flatter to themselves that I am actually already great and exalted. और वो अपने आप वो ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत महान भक्त हूँ। So some aspect of self-cheating is also there. It can be there. Like usually it is there. तो खुद को धोखा देने वाली बात भी है इसके अंदर थोड़ी सी कि वो खुद को धोखा देना चाहते हैं। And these people can sincerely believe that I'm so great and it means that really I deserve that everyone has bowed down before me. They have this their duty. तो वो ऐसा समझते हैं, वो ऐसा उनको लगता है कि मैं इतना महान हूँ, तो
तो सभी को मुझे प्रणाम करना चाहिए और मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत महान भक्त हूँ। Or for example, they can think that Supreme Lord on the altar, he always reciprocates me. Each and every 15 minutes he blinks me like this. Blinks. तो उदाहरण के लिए वो ऐसा कह सकते हैं कि हर 15 मिनट में भगवान जो है उनको आंख मारते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। Yeah, of course I'm not about to mention the names, but it is real case. One devotee, he had and he still has this idea that I'm chanting Mahamantra before my altar, and this Murti of Krishna, he blinks me, and by blinking, this Murti wants to tell me, Krishna wants to tell me, I'm here, don't forget me. तो ये कोई मजाक नहीं कर रहे, ये सही की घटना है। वो भक्त अभी भी हैं और उनकी ये धारणा है कि मैं जब अपने ऑल्टर के सामने माला करता हूँ तो भगवान जो है मेरे को आंख मारते हैं और कहते हैं कि आप भूलना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। And in this particular moment, when he has such hallucination, then how he reciprocates on this imaginary blinking, he smiles and he says, yes, yes, I will never forget you, like this. But it happens. Why I'm saying that it is imagination? Because it happens every 15 minutes on a regular basis. तो ये एक भ्रम है जो उस भक्त के अंदर है और ये होता है भ्रम कि वो ऐसा सोचता है और उस भ्रम के प्रतिकार में वो भी क्या करता है, भगवान को कहता है कि हाँ ठीक है, हंसता है और थोड़ा मुंह हिला के बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं समझ रहा हूँ। And it is quite difficult to believe that these relationships really exist, because if these relationships are so intense and so close, why he, Supreme Lord, why he does all the same? Why he only blinks? Why he doesn't do anything else? अगर ये सच ही है तो अगर ये बिल्कुल सच है तो इसमें सिर्फ भगवान सिर्फ आँख ही क्यों मार रहे हैं और भी कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सुन के ऐसा लग सकता है कि ये बिल्कुल सही है, भगवान से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो सिर्फ भगवान आँख ही क्यों मार रहे हैं और कुछ क्यों नहीं कर रहे? So this tendency to take this process cheaply or sentimentally and so on, one can get rid from this tendency by reading Srila Prabhupada's books and by practicing devotional service in association of, of mature devotees of the Lord. तो ये I can repeat again. This tendency to take everything cheaply, one can get rid from this tendency by reading Srila Prabhupada's books and by associating with mature devotees and performing devotional service with them. तो ये जो टेंडेंसी है कि भक्ति को सस्ता लेना या भावुकता के स्तर पर करना, इसको खत्म किया जा सकता है अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा जाए और जो उन्नत भक्त हैं उनके संरक्षण में, उनके संग में भक्ति किया जाए। So the question raises, how can I get the desire to listen about Krishna? Because when we just start our practice, usually this desire is absent. It is quite boring to read books on a regular basis. Books, any books, actually any books, it is quite boring for ordinary person to read on the regular basis. What to speak of books that, for example, I open and I don't understand, or I don't understand much what is written here. तो प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, लेकिन हम कैसे भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए अनुराग उत्पन्न करें, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए जो है एक स्वाद, एक टेस्ट उत्पन्न करें। So we have this verse from Srimad Bhagavatam 1-16. 1-16. तो हमारे 1-16. 1-16. तो इसके लिए हमारे पास भागवतम का जो पहला स्कंद है, Very famous. दूसरा स्कंद है और 16वां श्लोक है, वो हमारे पास है। उसके 1-16. एक अध्याय 1 श्लोक संख्या 2, सॉरी पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 16। 1-16. 1-16. Not 16, 16. So it is 16. 16.
Okay? 16. Okay. Shushu Shoksha Dadana Siava Sudeva Karkaruchi. Sen Mahat Seva Viprak Punya Tirtha Nisheva. So it is said here. What wise born sages, by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. तो इसका श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि ऐसे भक्त जो सारे जो पाप हैं या गंदगी है उनसे मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से हमें भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए जो स्वाद है वो उत्पन्न होता है. So it means that it is one of the important and non-replaceable ingredients of our practice that one should serve great devotees. तो ये इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि हमें क्या है जो उन्नत भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए. Punya Tirtha, it is written here. Punya Tirtha. Punya Tirtha means those who have no faults, those who have no imperfections. तो पुण्य तीर्थ का अर्थ है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो. And all of us were in this ISKCON society, which was established by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो हम सब जो यहाँ पे प्रभुपाद जी के स्थापित ISKCON सोसाइटी के अंतर्गत हैं. We can have imperfections and we have them. We have these faults, and the people who are around us, other practitioners, also can have some issues to work out. तो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो भक्त हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ imperfection हो सकते हैं. But if we do our service, even little service, which can someone can consider this to be insignificant service or small service, if we do it with intention to satisfy our founder and acharya, then it means that we serve Punya Tirtha. तो हम सब के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी भी सेवा प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं जो कि पुण्य तीर्थ हैं, तो हमें क्या है उसका लाभ मिलेगा. It is the question of consciousness. इससे चेतना का ही फर्क है. So one can do his service mechanically or consciously, and there can be some different motives, and and it is really nice to cultivate this motive that I do it for Srila Prabhupada's satisfaction and for satisfaction of my spiritual master, who is Srila Prabhupada's servant and Srila Prabhupada's representative. तो ये बस चेतना का फर्क है कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ वो प्रभुपाद जी के लिए कर रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ. And then if we do some small seva or big seva or medium seva, if we do it on a regular basis, we can see that our interest to Srila Prabhupada's books increases. तो अगर हम ऐसे सेवा करते हैं, छोटी सेवा, बड़ी सेवा या कोई मध्यम वर्ग की सेवा भी करते हैं प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारा जो भगवान की लीलाओं को सुनने में जो टेस्ट है, वो रस है, वो बढ़ जाएगा. And in one of the letters, Srila Prabhupada writes to one of his disciples that actually each and every service, devotional service, that can be performed, from transcendental point of view, it is all on the same level. It is any kind of devotional service is important. तो प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को एक पत्र में लिखते हैं कि कोई भी सेवा अलग अलग स्तर की हो, लेकिन कोई भी सेवा जो अगर दिव्य स्तर से किया जाए तो हर सेवा एक है. And he writes in this letter, which is quoted in Srila Prabhupada Shikshamrita, that actually there is no difference. You wash the floor in the temple, and I am translating and writing these books, and the importance is the same. The importance is the same. तो शिक्षार्थ पुस्तक के अंदर प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है और मैं पुस्तक को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो दोनों सेवा के अंदर कोई फर्क नहीं है. So it is vision from transcendental point of view. From practical point of view, of course, there is difference, because Srila Prabhupada writes his books for 10,000 years for all these people who are going to read these books. And one who washes the floor, this service, next day you have to wash it again.
So basically, the importance, there is a difference from practical point of view, but there is no difference from transcendental point of view. तो व्यवहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि इसमें फर्क है कि कोई अगर जमीन को साफ कर रहा है तो आज कर रहा है, उसको दोबारा कल करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिख रहे हैं वो आने वाले 10,000 साल के लिए है। तो दोनों के व्यवहारिक रूप से फर्क है, लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर से देखें तो दोनों सेवा में फर्क नहीं है। So basically, regarding this particular letter, it was the way how Srila Prabhupada was expressing his gratitude to his disciple, who was doing so-called insignificant or so-called menial service, but Srila Prabhupada anyway he appreciates this service. तो बेसिकली इस पत्र के अंदर प्रभुपाद जी उस शिष्य का सराहना कर रहे थे जो कि कहने के लिए छोटी सेवा कर रहे थे सफाई की, लेकिन प्रभुपाद जी जो है उनको भी क्या है धन्यवाद कर रहे हैं। So the same story is here. Our service, our seva that we do, it sometimes can be not so much appreciated by the devotees who are around us, but it is always appreciated by our founder Acharya. हो सकता है कि हम कुछ सेवा करें जो हमारे आसपास के लोग उतना उसकी सराहना ना करें, लेकिन प्रभुपाद जी के द्वारा हमेशा वो सराहना की जाती है। And of course, because of performing devotional service, we get this eternal benefit, which is always available on our spiritual bank account. तो और निश्चित रूप से जो भी सेवा हम करते हैं, जो प्रभुपाद जी जो उसका आध्यात्मिक लाभ है जो कि कभी खत्म नहीं होता, वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Okay, if you have some questions, let's अगर discuss. कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Thank you, Madhava Murari, for very Hare nicely Krishna. describe all the things. Hare Krishna. I have a question. Okay. As you mentioned, so many ism in Russia and so many ways. Ism, yeah. And one point you have described, Krishna give us so many gifts. Yeah. His scriptures, his award, his breaker, so many things. And despite that, incarnation also so many because of time, kalpas. But despite that, we forget all the things. How can we develop the gratitude towards of Krishna? So, as I mentioned, one more thing. As in Russia and another country also, because in India it's very natural for people in Krishna, Ram, and so many incarnations are here to connect with the God, Yeah. logically and unlogically. Okay. But in Russia and other countries, too difficult. I don't know how to. Our society is international. So my question is, so how to please share some realization in your perspective. So the first realization is that our society is international. तो ये बता रहे कि हमारी जो सोसाइटी है वो अंतर्राष्ट्रीय है, तो भक्ति जो है पूरे विश्व में हर जगह पे है, रशिया में भी है। तो प्रभु जी का दो प्रश्न था और बेसिकली दो पॉइंट प्रभु जी कह रहे थे। एक तो कि अलग अलग इज़म है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसके अंदर जो भगवान ने हमें दिया है, तो भगवान जो अवतरण लेते हैं और वो जो तोहफे हमें दे रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर कैसे ग्रैटिट्यूड उत्पन्न हो, कैसे हमारे अंदर उसके लिए आभार हम प्रकट करें भगवान का, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं और हम उसको इतना वैल्यू नहीं करते। Well, Second one is he was asking for realization of yours from Russia. तो दूसरा जो प्रभु जी का प्रश्न था कि भारत में तो हमें राम कृष्ण सब पता है, तो बड़ा आसान होता है भक्ति करना और जानना, लेकिन रशिया में तो कृष्ण राम के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ कैसे लोगों को भक्ति प्राप्त हो रही है और क्या वहाँ का कल्चर है। Okay, if to speak about our memory, how it works, about forgetfulness, so we have letter, or likely it was class given by Srila Prabhupada, and in that class he was giving an advice that actually everyone should write down his realizations, and moreover, every day one should write at least one line, at least a little bit of, because in Kali Yuga, to memorize something means to write it down. तो पहला जो चीज़ था कि हम भूल जाते हैं भगवान का आभार प्रकट करना, तो
तो उसके प्रति में प्रभुपाद जी प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें क्या है, हर दिन जो है कुछ लिखना चाहिए, अपनी जो विचार है या फिर अपनी जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार जो है भगवान का, उसको लिखना चाहिए हर दिन। और क्योंकि कलयुग के अंदर किसी चीज को याद रखने की विधि क्या है कि उसको लिखना। Because it is really so, we have got some realization. We, for example, are situated on some particular level of consciousness by mercy of devotees who are around us. For example, we are visiting some festival or Radha Yatra, and we can feel something, and we connect this with something that we've read in Shastra, how it works, who are these people around me, how should I behave with them. So basically everything is clear at this moment. So it is very nice to sit down and to write some thoughts regarding this, because otherwise, because it is guaranteed, a few days will... After a few days, some new other impressions will come. In this flow of time, new impressions will come and it will be replaced. So it is important to write what we want not to lose. We should write what is important for us. It's really important. We should write down. तो भक्तों के समाज में आकर या भक्ति करते हुए अलग अलग फेस्टिवल में या अलग अलग जगह पे जो भी हमारे साक्षात्कार होते हैं उसे हमें लिख लेना चाहिए। अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर अगर कोई नए साक्षात्कार आएंगे तो पुराने वाले छूट जाएंगे। तो उसको सहज अगर हम उसको रखना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें लिख लेना चाहिए। What is important for us, it is better to write down, like for example, we write down the passwords for Wi-Fi, for email, for bank account, and so on. It is really, it is not, it will be trouble if we will forget some information which is, which is really important even in our practical life. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि किसी वाईफाई का पासवर्ड या बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, उसको हम लिख के रखते हैं कि वो हम भूल ना जाएं। तो वैसे ही हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं उसे हमें लिख लेना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। Regarding gratitude, well, actually gratitude is a spiritual quality, and we can develop this quality by associating with those who have it. With those devotees who feel like this, and in that sense, it is not the question of nationality of a country, because even in any country, people, they are grateful to Srila Prabhupada that he established the society. तो ग्रैटिट्यूड के बारे में था कि हम कैसे आभार प्रकट कर सकते हैं प्रभुपाद जी का। तो ऐसे लोग जिनके अंदर वो भावनाएं हैं, वो आभार प्रकट करने की, मतलब जिनका हृदय प्रभुपाद जी के grateful people, everywhere in any country there are people who are grateful to Srila Prabhupada that he established this society, that he gave all these facilities for spiritual growth and so on and so on. तो प्रभुपाद जी के लिए जो ग्रैटिट्यूड है अलग अलग देशों में, वो जिन भी भक्तों के अंदर उनका संग करके हम उस ग्रैटिट्यूड को प्रकट कर सकते हैं। So it is not the question of belonging to particular country or nationality or citizenship. तो ये किसी देश, किसी काल या किसी पर्टिकुलर कंट्री का उसमें कुछ नहीं लेना देना है। It is the question of relationships with the sadhu. तो ये जो है सिर्फ उनके साथ संबंध होने की बात है। Even Russian Orthodox Church has its followers in Africa and Japan. You know, Russian Orthodox Church means Christians from Russia. They have followers because this tradition is Russian. It looks like Russian and so on, different things. But they have followers in Japan, in Africa. उदाहरण के लिए जो रशिया के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अफ्रीका में भी हैं, जापान में भी हैं और कई जगह पे हैं। Not maybe, they have. हाँ, उनके पास है अलग अलग देशों में। So because it is spiritual phenomenon. क्योंकि ये आध्यात्मिक विधि है। And
what can I say? For example, if Indians, yeah, they consider Vishnu or Shiva or Durga or Ganesh or Krishna to be, we would say, their gods, their gods. तो जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो लोग हैं विष्णु, गणेश, शिवा, जो अलग अलग देवी देवता हैं उसको वो अपने भगवान मानते हैं. The same way in Russia, it is common to consider Jesus Christ to be Russian God or our religion, our tradition, our way. इसी तरह से रशिया के अंदर जो जीसस क्राइस्ट है उसको हमारा भगवान या हमारे वो गॉड मानते हैं. But it is not so. First of all, it is not so because it is not that Jesus Christ was born in Moscow. It is not so. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं थे. In Moscow, he was not born in Moscow. वो मॉस्को में पैदा नहीं हुए थे. He was not born in Moscow. तो ऐसा इसलिए नहीं है कि He's from another land. मॉस्को में पैदा नहीं हुए. And moreover, Russia became Christian country because 1,000 years ago, this population, basically they were forced to accept this religion. और इससे भी ज़्यादा रसिया जो है 1000 साल पहले ही क्रिश्चियन बना था क्योंकि उनको फोर्स किया गया क्रिश्चियन बनने के लिए. And now they say it is ours. लेकिन अब वो कहते हैं कि क्या है जीसस क्राइस्ट हमारे हैं. People can consider some religious traditions or particular gods or particular process to be there from the national point of view, but it is one more ism. Yes, of course. तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी धर्म को, किसी भगवान को अपना बता सकता है एक नेशन के अंतर्गत या एक राष्ट्र के अंदर, लेकिन वो भी क्या है एक इज्म है, एक विचारधारा है. Because even if we will open Bhagavad Gita, the second chapter, we will get to know that we are not these bodies, we are spiritual souls. क्योंकि हम अगर भगवद गीता खोलेंगे दूसरा अध्याय तो हम देखेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है. So, and our relationships with Supreme Lord are not based on any national or other considerations. It is eternal link, eternal connection between Krishna on one side and living entity on another side, which can be presented in human body, in insect body, in cow body, in dog body, and so on and so on. और हम ये देखते हैं कि दूसरे अध्याय के अंदर भगवद गीता की कि हम आत्मा है और हमारा जो है नित्य भगवान के साथ संबंध है. हम किसी भी शरीर में हो सकते हैं, ह्यूमन के शरीर में, इंसेक्ट के शरीर में, लेकिन हमारा किसी भी देश, काल, राष्ट्र, इससे कोई संबंध नहीं है. जो एक जीव का संबंध है भगवान के साथ वो शाश्वत है. Supreme Lord is for everyone, and Russia, for example, Russia cannot take monopoly on Jesus Christ. That Jesus Christ is meant only for Russians. And followers of Hindu Dharma, the same way, they cannot say that Krishna is our God only, and other people, you don't involve. It is only our way. तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरे हैं, भगवान सबके हैं. जैसे कि क्रिश्चियन जो है ये नहीं कह सकते कि जीसस हमारे हैं, वैसे ही जो भारत के लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि कृष्ण हमारे हैं. कृष्ण सबके हैं. So Krishna empowered Srila Prabhupada to give this knowledge to the whole world on the basis of understanding that these relationships are not about the earth when you took birth, but it is about this spiritual connection which is beyond material creation. तो बेसिकली कृष्ण ने जो है श्रील प्रभुपाद जी को शक्ति प्रदान करी जिससे कि वो पूरे विश्व के अंदर भगवान के बारे में बता सके लोगों को, क्योंकि जो ये संबंध है वो किसी देश या किसी दुनिया के हिसाब से नहीं है. ये शाश्वत संबंध है भगवान का जो पूरे ब्रह्मांड से बाहर है. So each and every time when some devotees from India, when they are surprised why all these people from other countries, why do they take our religion? Why do they take? The answer is very simple answer. It is by mercy of Srila Prabhupada, who is empowered by all powerful Krishna. That's all. तो कई इसलिए जो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार
कि जो हमारे भगवान हैं वो विदेशों में कैसे लोग पालन कर पा रहे हैं, क्यों लोग विदेशी लोग जो हैं वो कृष्ण को अपना भगवान क्यों बता रहे हैं। तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि जो भी मतलब हमें जो है कृष्ण प्रभु जी बता रहे हैं कि उनको कृष्ण के बारे में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ, पता चला, और वो श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान करी गई कि वो सभी जीवों को उनके बारे में बताएं। So basically, it is not the story about foreign followers. It is basically about the story about the power of Srila Prabhupada's preaching and about Krishna's will. It is about this. तो ये कहानी इस बारे में नहीं है कि कौन पालन कर रहा है और कौन प्रचार कर रहा है। ये इस बारे में है कि प्रभुपाद जी एक शक्ति प्रदत्त प्रचारक हैं और प्रभुपाद जी शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं जो कि कृष्ण की आज्ञा से पूरे विश्व में प्रचार किया है। Okay, Hare Krishna, do we have some more questions or time to discuss these questions? What do you think? What should we do? और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। फर्स्ट एक कोई प्रश्न लिया जा सकता है। One more question, right? We can take one. Okay, let's do like this. Yes, please. हमारे तो प्रश्न नहीं है, सेम जैसे प्रभु जी क्वेश्चन किया ना, वही क्वेश्चन में प्रभुपाद को भी अमेरिका मुंबई में इस्कॉन में इंडियन लोग क्वेश्चन किए थे कि विदेशी लोगों को तुम कृष्ण भगवान दे दिया तो हम लोगों का भगवान क्यों उत्तर दे दिया। तो वही क्वेश्चन प्रभुपाद बोले थे कि अगर कृष्ण भगवान तुम्हारा है, हम दे दिया, तो सूर्य चंद्र किसका है, और हम तो चंडाल को ब्राह्मण बना दिया, तुम ब्राह्मण को चंडाल बन के रहा। वही क्वेश्चन किया। Okay, so It's a comment. No, it's a comment. Prabhuji is saying that Prabhupada was asked in the Mumbai that why you have given Krishna to this all foreign people. So then Prabhupada replied that this Surya and Chandra, they are whose? Sun Who is the owner of Surya and Chandra? And I am making Chandala into Brahman, and you all are making Brahman into Chandala. So what you are doing? Yeah, nice response. Hare Krishna, thank you very much. Okay, Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanand. Hare Krishna, thank you very much.